We are at more or less the end of the lockdown period. One very motivating thing that we saw during this lockdown is that a lot of us volunteered to feed the street dogs who were left with no other option because the roadside food stalls had closed down. But once the lockdown is over, the volunteers would go back to their normal lives. Other than the regular feeders who have been feeding even before lockdown, the dogs would have no other option but to scavenge for food as they were doing earlier. If to cope with this abrupt change, the dogs start behaving a bit unnaturally, there might be situations where animal cruelty can increase. To discuss more about the behavioral changes that we can expect and the ways forward, we have with us a behavioral biologist who has been working with free-ranging stray dogs for more than 11 years now. Anindita Bhadro is the Associate Professor and the Associate Dean of the International Relations and Outreach of ICER Kolkata. Joining along with her is a known face, a proponent of animal welfare, Anshuman Hajra. Welcome you both to Talking It Up. The question today that we have for both of you is, what are the possible behavioral changes that we expect to see in street dogs once the lockdown ends and the feeding abruptly stops? And also along with it, what would be your recommendation to feeders from now to end of lockdown? Thanks, Animesh. It's a pleasure. See, during the lockdown, we have actually observed migrations between territories. Dogs have been moving to areas where feeders have been giving them more food. So now, once the lockdown is over and people are out on the streets, we might expect more aggression and more dog-human conflict, because the dogs between the territories would be fighting amongst each other, and there will be people on the streets, and there's going to be definitely situations of conflict, so we have to be very careful about that. Secondly, the people who've been so nice that they have gone out and fed the dogs during the lockdown have often probably given them more food than they are used to. So the dogs are now used to getting this rich source of food, and suddenly there's going to be a dearth of this once the feeding stops. So it is recommended that people phase out rather than stop feeding altogether. So if you were going and feeding every day, maybe now go on alternate days, and then a few days later go once in 3 days, and so on, and gradually reduce the resources that were available to them rather than stopping this completely and abruptly. This is such a pan-India topic that I would like to speak in local language like Hindi. Let me take off this mask. ये जो अनिंदिता अभी कह रहे थे कि अभी जो खाना नहीं मिलने के वजह से कुत्तों को अपना मोहल्ले में खाना कम मिल रहा है, वो दूसरे जगह पे जाएंगे, क्योंकि भूखे मर के तो वहाँ पे रहेंगे नहीं। कुत्ते वैसे अपने मोहल्ले में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे हालत में तो वो जाएंगे दूसरी जगह पर। जहाँ पे जाएंगे हो सकता है वहाँ पे कोई खिला रहा हो, इसके लिए वहाँ पे खाना मिले, लेकिन वहाँ पे जो वो मोहल्ले के जो कुत्ते हैं उनके साथ इनकी झड़प होगी। और जो लोग लॉकडाउन के बाद निकलने वाले हैं, इंसानों को ये ख्याल रखना चाहिए। और ये भी एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अभी रास्ते खाली रहते हैं, तो कुत्तों को लगने लगा कि रास्ते उनके लिए है, तो ये झड़प के टाइम वो लोग ख्याल नहीं रखेंगे कि आसपास लोग रहेंगे। तो शुरू में लोगों को ये ख्याल रखना है कि कुत्तों को हमारी आदत चली गई है, ये एक बात है। दूसरी एक और बात है कि जो फीडर्स खिला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा देश का प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री और बहुत सारे नेता आगे बढ़ के आके बोले हैं कि जानवरों को खिलाइए, उनकी मदद कीजिए, तो बहुत लोग आगे आए हैं। लेकिन अचानक एक दिन रुक जाएगा तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जैसे अनिंदिता कह रही थी कि फीडर्स को चाहिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन का खात्मा आगे आए, हम लोगों को भी चाहिए कि खिलाने का पैटर्न चेंज करके, जैसे अभी जहाँ पे रोज खिलाते हैं वहाँ पे एक दिन छोड़ के खिलाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ने पे फिर कुछ दिनों के बाद
2 दिन छोड़ के 1 दिन खिलाएंगे। ऐसे करके उनको आदत लग जाएगा कि अभी ये खाना धीरे धीरे कम होने वाला है, तो हम कुछ और बंदोबस्त करते हैं। हो सकता है अपने मोहल्ले में वापस चले जाए, हो सकता है कुछ और जुगाड़ कर ले। तो जो ऐसे करके लॉकडाउन के बाद फीडिंग को रिडक्शन का प्लान भी फीडर्स को याद रखना चाहिए। Another aspect that we have been witnessing is that dogs are running towards vehicles, expecting it to bring food for them, which has been the case in the lockdown period. But once life goes back to normal, do you expect that this trait would give rise to road accidents? How would we avoid that? See, unfortunately, avoiding this situation is going to be quite difficult because dogs would be running behind vehicles expecting more food, and there will be more vehicles on the streets. So I guess we just depend on people being more aware and being more careful while they're driving. Another thing that we have to keep in mind from the perspective of feeders and dog lovers, that if you are still going to feed dogs, maybe park your vehicle further down from the feeding site and walk, instead of take your car there or your two-wheeler there and right there feed them, so that they see people walking towards them now who are coming to feed them, and not just a vehicle which comes and then there's food for them. So that could be one way you get them adjusted. But frankly speaking, we don't really know how long dogs take to get adjusted to these changing circumstances. They would have got adjusted to the lockdown, no vehicles on streets, not being aware of vehicles, some people coming and feeding them, and then suddenly there are going to be people back on the streets with all their vehicles. So we would expect more accidents than normal, probably. Unfortunate but true. All we can do is be more careful while we are out there driving, and keep our eyes open for dogs which might come in our paths and try and avoid an accident. जो गाड़ी लेके निकलते हैं इनको थोड़ा हमारे इतने साल के दोस्त हैं रास्ते के कुत्ते और बिल्ली, तो ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की तरह इनको आदत लग चुका है इतने जगह का। तो अभी जब हम गाड़ी फिर से चालू करेंगे तो इनको भी हमारे लिए फिर से जगह छोड़ने के लिए इट्स लाइक सेंस ऑफ क्या कहते हैं पर्सनल स्पेस वो उनके हो चुका है, उसको फिर छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो लोगों को थोड़ा कुत्ते और बिल्ली देख के थोड़ा गाड़ी रोकना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगा, खुद ही चले जाएंगे। तो ये आदत तो लोगों को करना पड़ेगा, ये तो हम बता के कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो अनिंदिता और एक बात कर रही थी कि खिलाने वाले गाड़ी भी आजकल बढ़ गए हैं, कि जो गाड़ी से खाना लाते हैं और गाड़ी के सामने उनको दे देते हैं। तो इससे उनके दिमाग में ये भी संपर्क हो गया कि ये गाड़ी से मुझे खाना मिलने वाला है। तो पहले जैसे सिर्फ भाग के कोई साउंड से या कुछ प्रीवियस पूर्व खराब मेमोरी, उनका कोई भाई या बच्चा मर गया, उससे दौड़ते थे, अभी खाने के लिए भी दौड़ते हैं। तो ये कम से कम दूसरी जो बात है, इसको हम थोड़ा निकाल सकते हैं उनके दिमाग से। अगर हम गाड़ी को थोड़ा दूर रख के उससे निकल के हम लोग थोड़ा पैदल खाना लेके उनके पास आए, तो उनको लगेगा कि इंसान जैसे खाना पैदल आ रहे हैं तो ला रहे हैं, तो गाड़ी से हमको खाना मिलने वाला है। ये जो संपर्क है इनका दिमाग से थोड़ा थोड़ा टूट जाएगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर वो सारे गाड़ियों के पीछे भागते रहें, और अभी लॉकडाउन में क्या होता है, एक गाड़ी आता है पीछे ही दूसरा गाड़ी नहीं रहता है। दूसरे टाइम में तो पीछे से कोई गाड़ी आके उनको मार देगा। तो ये भी एक चीज़ है जो फीडर्स को याद रखना चाहिए उनका आदत सुधारने के लिए। Those were some great insights. I'm sure a lot of us had not thought about it that way. This will help all the new volunteers who have been feeding street dogs and doing a commendable job at that would benefit out of this. Thanks a lot for your time and logging in remotely. It was a pleasure talking to both of you. Thank you. Thanks, Animesh, for calling me, and it was good interacting with you. Just to keep you posted that we are doing a scientific project, a citizen science project, with people who are sending us videos on dogs feeding, on dogs fighting, any behavioral observations that they make. So if anybody is interested, please ask your viewers to visit the Dog Lab page on Facebook and join us in this Bonker Scavengers citizen science project if possible. Thank you. आप दोनों को धन्यवाद, अनिंदिता और अनिमेश दोनों को। Friends, we don't know what would have happened to them if you had not stepped up and spent your lockdown period thinking about them and feeding them.
but we also need to ensure that their life is not hampered because of any behavioral changes that happened because of this feeding. Request you to follow the advices for the benefit of the dogs whom you love. Subscribe to our channel and keep watching similar videos and ask us any query that might come to your mind. We'll get in experts to resolve them for you. Thank you.